beneficial for all of you to understand a little bit about prompt engineering, right? So we already discussed that अच्छे आउटपुट्स के लिए अच्छे इनपुट्स देना जरूरी है. एंड फॉर दिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अच्छे इनपुट्स मींस गुड प्रॉम्प्ट्स. Correct. So we'll see a little bit of different types of prompting techniques here, at least the basics one. Okay. Now, what is a bad prompt, right? Something which has no context, missing context, not enough information. जैसे मैं अगर एक prompt लिखूं, explain JavaScript or explain Java or explain Python, there is no context. I am not even suggesting कि target audience क्या है, right? The answer that I'm going to get for this particular prompt, I have not given any context कि ये कौन पूछ रहा है, ये किसके लिए respond करना है आपको, right? So if a developer is asking explain JavaScript versus if a student in a school is asking explain JavaScript, दोनों आउटपुट सेम नहीं होंगे ना. Explain it to me like a 5-year-old kid और explain it to me like a senior developer. दो अलग अलग चीजें हैं. आप आउटपुट सेम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. बट यहाँ पे मैंने बताया ही नहीं है कि हु एम आई, वाई एम आई आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. मैं क्या इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट पढ़ाना है, या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे खुद पढ़ना है, या फिर मुझे रिसर्च करनी है. आई हैव नो आइडिया, राइट? एंड इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी जेनरिक आउटपुट. So better prompts usually have a bit of context added to it, right? Explain JavaScript to a beginner using simple language and real world examples. जो भी होगा, clear task होना चाहिए. What is the purpose of, you know, you giving this particular prompt? किस ची- किस target audience के लिए आप ये बना रहे हो? That should be very clear, right? So we learn a few techniques around this. ठीक है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इट मैटर्स. पहला तो क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर करता है? यस इट डज. बिकॉज फर्स्ट, इवन इफ यू आर वर्किंग विथ ह्यूमंस, राइट, मैं अगर आपके साथ भी काम कर रहा हूँ और मैं अगर आपको इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस दे दूं, तो आप भी अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, राइट? फॉरगेट अबाउट एआई. इफ आई गिव यू इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस यू विल नॉट बी एबल टू डू द एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, राइट? तो जब ह्यूमंस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ काम नहीं कर पाते तो एआई कैसे कर पाएगा? तो वी वांट क्लैरिटी ऑफ टास्क, वी वांट बेटर कंटेंट. डिजायर्ड फॉर्मेट क्या है? क्या मुझे आंसर एक टेबल के फॉर्म में चाहिए, या फिर मुझे एक आंसर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में चाहिए, या फिर मुझे आंसर एक इमेज के फॉर्म में चाहिए? यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, right? So we'll start with three techniques, right? Zero shot prompting, few shot prompting, and chain of thought prompting. And you will get some clarity around what all these three different techniques are. ठीक है. Now first one is zero shot prompting, the technique which all of you are already currently using. ठीक है. Zero shot prompting का मतलब क्या होता है? You are giving a task without giving any examples. तो मैं कोई सैंपल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि एक्स वाई जी डू दिस, है ना? फॉर एग्जाम्पल, राइट एन ईमेल फॉर अ लीव. मुझे ऑफिस में नहीं जाना है आज, मुझे छुट्टी चाहिए, उसके लिए एक ईमेल लिख दो. या फिर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो हिंदी में, या फिर इस पर्टिकुलर वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग बता दो. एनीथिंग लाइक दिस, वेर यू जस्ट गिव अ टास्क, यू गिव इंस्ट्रक्शंस, यू डोंट हैव टू गिव एनी एग्जांपल्स. आपको ढेर सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं देना है, ये बहुत सिंपल टास्क होते हैं. एंड यू आर ऑलरेडी यूजिंग दिस, राइट? यू आर ऑलरेडी यूजिंग दिस टेक्निक. जैसे मैं अगर बोलूँ कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्रेंच, आई लव प्रोग्रामिंग, इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करो, तो उसने करेक्ट आउटपुट दे दिया और वो दे भी देगा, राइट? नाउ दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टास्क जिसमें मैटर नहीं करता है कि हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, राइट? बिकॉज इट्स अ ट्रांसलेशन टास्क. तो डज नॉट मैटर कि मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, या मैं एक टीचर हूँ, या मैं कोई सीनियर पर्सन हूँ. इट जस्ट डजेंट मैटर. ट्रांसलेशन विल रिमेन सेम. आप बोलो उसको, मैं बोलूँ, या कोई भी और बोले, इस सेंटेंस का फ्रेंच ट्रांसलेशन तो सेम ही रहेगा, कोई भी पूछो उसको. डज नॉट मैटर, राइट? सो स्ट्रेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. टास्क दे रहे हैं हमको, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नीडेड नहीं है. यू स्ट्रेट गो विथ टास्क एंड इंस्ट्रक्शंस. आपको कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है ना, कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन के कोई एग्जांपल्स आपको देने की जरूरत नहीं है. Summarize the following paragraph in 2 lines. Let's say I give a paragraph and I ask it to summarize in 2 lines. मुझे कोई examples की जरूरत देने की not needed, not needed. Simple task है, paragraph is given, summarize it. Very simple.
और राइट मी अ प्रोफेशनल ईमेल रिक्वेस्टिंग लीव फॉर वन डे, मुझे ऑफिस से एक दिन की छुट्टी चाहिए तो उसके लिए ईमेल लिखो। वेरी वेरी डायरेक्ट टास्क, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग, यू जस्ट डोंट नो कि इसको जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। So you can use it for all day-to-day simple tasks like translate करना है, summarize करना है, you want to write emails or you need some ideas or you want to write basic generate code. For all these kind of things, you can use zero shot prompting, right? Uh, but the interesting part starts from few shot prompting, right? Now, few shot prompting is very very important, जहां पे आपका इनपुट और आउटपुट में कोई पैटर्न है, देर इज सर्टेन पैटर्न, सर्टेन कोरिलेशन बिटवीन योर इनपुट एंड आउटपुट, एंड टू एक्सप्लेन इट टू समवन द बेस्ट वे टू डू इट वुड बी बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो, एआई को आप ये बोलते हो कि बॉस यू नीड टू आंसर मी दिस क्वेश्चन, बट इंस्टेड ऑफ मी राइटिंग इन डिटेल कि आपको क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, आई विल गिव वन इनपुट, उसका आउटपुट मैं खुद आपको बता देता हूँ, मैं दूसरा इनपुट देता हूँ, उसका भी आउटपुट मैं आपको खुद बता देता हूँ, और फिर मैं तीसरा इनपुट दे दूंगा, फिर आप बताओ उसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट? सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल, यू आर ट्राइंग टू टीच विथ एग्जाम्पल्स। Let's take an example here, right? You say I am looking for um, similar words, or I'm looking for synonyms or something like that. Though you could write a prompt, and that is totally fine. I'm just giving you basic examples. ठीक है? We would ideally use this for something more complex. हम एक्चुअली जब इसको यूज करेंगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए यूज करेंगे, बट जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, राइट? तो मैं अगर बोलूंगा कि इफ रिच indicates wealthy, silent indicates quiet, begin indicates start, fast will indicate what, तो इट विल गिव मी आउटपुट क्विक, क्योंकि पिछले वाले तीन एग्जांपल से उसको समझ गया है कि सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड मुझे बताना है तो वो बता देगा, राइट? नाउ आइडियली यू वुड यूज दिस इन समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। लेट्स से मुझे सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, राइट? फॉर एग्जांपल, I am a person working at Zomato, and I have this huge pile of data जहाँ पे मेरे पास सारे जितने रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर्स हैं उन सबके रिव्यूज भरे पड़े, राइट? और फॉर सम अदर कंपनी आई हैव लॉट ऑफ रिव्यूज फ्रॉम माय यूजर्स और फ्रॉम माय कस्टमर्स, एंड अब मुझे उसको सेग्रीगेट करना है, एनालाइज करना है, इन विच reviews are positive, which reviews are negative, and which reviews are neutral, to get a brief understanding कि मेरे यूजर्स कितने satisfied है मेरे सर्विस से, right? So what do I do? I dump all of this data and I just give a few examples, right? Amazing product है, this is an example of positive review. Worst purchased ever, this is an example of negative review, right? And then for all other reviews, I just ask AI to do the remaining, right? I really enjoyed using it, तो automatically positive में categorize हो जाए। तो जहां पे आपको क्लासिफाई करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, या ईमेल फॉर्मेटिंग इन अ पर्टिकुलर, जहां पे भी कस्टमाइजेशन आ जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल, आई वांट टू राइट ईमेल्स बट मेरे को जेनरिक ईमेल नहीं लिखना है, जेनरिक ईमेल लिखना होता तो मैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग यूज कर लेता, राइट? आई वॉन्ट टू राइट एन ईमेल जो मेरे कंपनी के फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। आई वॉन्ट इट टू बी एग्जैक्टली दैट फॉर्मेट, मेरे कंपनी में ऐसे ही ईमेल लिखे जाते हैं, एंड आई वॉन्ट एआई टू राइट एग्जैक्टली द सेम वे। तो मैं क्या करूंगा, एक ईमेल का एग्जाम्पल दे दूंगा और सेकेंड वाले का टास्क दे दूंगा कि नाउ राइट एन ईमेल फॉर एक्स वाई जी पर्पस, और वो मुझे उसी एग्जाम्पल में लिख के दे देगा, राइट? So basically, few shot prompting is prompting giving a few examples. That few word stands for few examples. आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं और फिर अपना काम बताना है। तो जो एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं उसी से वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके आपका आगे का काम वो कर लेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब आई डिस्कस वन सिनेरियो व्हेन वी वर इन स्कूल, ओके? जब हम स्कूल में थे तो मैथमेटिक्स के जब भी क्वेश्चन पेपर चेक होते थे, राइट, वी यूज टू गो टू द टीचर, एंड टीचर ने एक जीरो दिया होता था, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे जीरो दिया होता था, एंड यूज टू गो एंड से मैम स्टेप का मार्क्स दे दो एटलीस्ट, आंसर रॉन्ग है बट एटलीस्ट गिव मार्क्स फॉर स्टेप्स। हैव यू डन दैट? हमने कभी ना कभी वो किया है, राइट? गिव मार्क्स फॉर स्टेप्स। क्योंकि मैथमेटिक्स या फिर कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो तो दी ओनली फाइनल आंसर डज नॉट मैटर, राइट? सिर्फ फाइनल आंसर मैटर नहीं करता। आपको अगर 10th या 12th के एग्जाम में, मैथमेटिक्स के एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका आप फाइनल आंसर लिख के नहीं आते, आप एक पेज का पूरा सॉल्यूशन लिख के आते हो,
जिसमें फाइनल आंसर तो बस एक लाइन है, लेकिन हाउ यू गॉट दैट आंसर उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है स्टेप बाय स्टेप. एंड लेट्स सी इफ आई एम यूजिंग एन एआई मॉडल, इफ आई एम यूजिंग अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, और मैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जीपीटी का हेल्प ले रहा हूँ, तो मुझे वहां पे आंसर से लेना देना नहीं है. आंसर उसने, अगर आपने एक मैथ्स का डाउट पूछा और जीपीटी ने अगर आपको आंसर बता दिया, दैट डज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, बिकॉज दैट वाज नॉट इवन योर प्रॉब्लम. आपको जानना था कि सॉल्व कैसे करते हैं. आंसर आंसर सिर्फ नहीं जानना था आपको, यू वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द आंसर, राइट. सो व्हेन द स्टेप्स मैटर, एंड हाउ यू वेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टू द सॉल्यूशन, दैट होल जर्नी, जब वो मैटर करती है, देन यू गो फॉर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, राइट. एंड देन यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विथ योर प्रॉम्प्ट्स कि मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए, राइट. जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, राहुल हैज 10 एप्पल्स, he gives 3 to his friends, then buys 5 more apples. How many does he have now? Right? तो इसका सॉल्यूशन आई वुड नॉट वांट 12. अगर मैं यूज कर रहा हूँ एलएलएम, तो आई वुड नॉट वांट जस्ट द आंसर 12. आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड हाउ आई गॉट द आंसर 12, राइट. इनिशियल एप्पल्स इज इक्वल टू 10, ही गेव अवे 3, तो रिमेनिंग कितने बचे? 10 minus 3, 7. He bought more 5, so कितना हुआ? 7 plus 5, 12. Now I'm giving all simple examples in this PPT. Ideally आपको भी पता है जब मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस, राइट. So writing at the end of your prompt, writing this thing step by step, or break down the solution into steps, um, give a detailed explanation of the solution, whatever, right? तो वो वाला statement जो होता है at the end of the prompt, that ensures कि ये पूरा जो chain of thought है, chain of thought meaning how I went from the problem to the solution, what was the chain of thought that I used to reach the solution, वो बहुत important होता है, right? Think step by step. ये instruction आप नहीं दोगे तो a lot of times you might just get the final answer, right? So chain of thought prompting again, and usually this is popular for problem solving, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके के जो टास्क है वहां पे ज्यादा यूज होता है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, राइट. A train travels 60 kilometer in 1 hour. How far will it travel in 4 hours? You need some explanation of this कि speed 60 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 4 आवर्स है. तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, and then you substitute the value 60 into 4 and you get the answer as 240 kilometers, right? That explanation is important. So you need that chain of thought prompting here to get the detailed solution. Right? So when do we use chain of thought? Very simple. Mathematics हो गया, arithmetic problems, logical puzzles, all of these kind of things that have some problem solving ability involved, have some logical reasoning involved, right? वहां पे हम इसको use करेंगे. So this is a little bit about prompt engineering, and I'm going to share with you a website that can help you. अगर आपको इसको और explore करना है future में, so there's this website called promptingguide.ai, right? And you can, जैसे हमने अभी पढ़ा, zero shot prompting, few shot prompting और chain of thought prompting, right? There are other techniques that you can add as well. और उसमें detailed में with examples दिए हैं. So what I'm going to do, I'm going to share this link in the chat, क्योंकि again this session is an introduction. This is not a full entire course on generative AI, right? But I just want to ensure कि हम इतना कवर कर ले कि आपको एक starter introduction मिल जाए, and then you can start exploring on your own. ठीक है. Now we did a little bit around prompting. Sir, what about actually using generative AI for different sorts of things, right? So क्या क्या cool चीजें हम कर सकते हैं? हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे. How many of you want me to show a demonstration of how you can create a game with the help of prompts? किसी को ये demonstration देखना है कि how can we create a whole game end to end with the help of a prompt? And first of all, can we do that? The answer is yes, we can do that. By the end of the session, you will know how to do that. But before that, let's start with some basic use cases. हम छोटे छोटे यूज केसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो विल डू वन एग्जांपल ऑफ इमेज, विल डू वन एग्जांपल ऑफ वीडियो, विल डू वन कूल एग्जांपल ऑफ म्यूजिक, ठीक है. विल मेक सॉन्ग्स, ओके. तो एक एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. नाउ फॉर इमेजेस, यू गाइस मस्ट हैव ऑलरेडी tried using GPT or using Gemini, right? But a lot of you are not using it
फॉर द राइट पर्पस, या रनवे, यू कैन यूज अ लॉट ऑफ दिस डिफरेंट टूल्स, राइट? अब चैट जीपीटी का एक कूल यूज केस है जो बहुत लोग नहीं यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज क्रिएटिंग इन्फोग्राफिक्स फॉर लर्निंग कंटेंट। ठीक है, आप बहुत कूल चीजें बना सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स में वगैरह हो गया, वहां पे चीट शीट्स आपको चाहिए। आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट? आई गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट हु इज लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग. Yes, we'll create a song. Don't worry, Shubha. We'll create a song. So I want to create um a infographic, a cheat sheet for the topic, more like a cheat sheet that I can use as a revision material for the topic, let's say lists in Python. ठीक है, तो lists एक टॉपिक होता है पाइथन के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो in your semester 1 at Grad School of Technology. In fact, I will be the instructor for Python programming as well, so we'll have a lot of fun. But any which ways, for the topic lists in Python, and that I can use, that that I can use as quick revision reference. Take something like this. And you will be amazed by the kind of output you get, right? By the kind of output you get. And हम सेम चीज, ये जो चीट शीट्स हम बनाते हैं जो हमारी पढ़ाई में हमें हेल्प करेंगी, इसका प्रिंट आउट लेके यू कैन ऑल्सो स्टिक इट इन योर रूम इफ यू वांट टू, यू कैन डू दैट एज वेल. आई ट्राई इन बोथ जेमिनाई एज वेल एज चैट जीपीटी. बट इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, जब हम लर्निंग नोट्स बना रहे हैं इन अ वन पेजर शीट काइंड ऑफ अ थिंग, तो चैट जीपीटी डज अ बेटर जॉब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. बट आई विल शो यू बोथ, दोनों का हम एक क्विक कंपैरिजन करके देख लेते हैं. आपको जो ज्यादा बेटर लगेगा आप वो यूज कर लो. ठीक है. प्रीवियसली मेरा बायस जेमिनाई की तरफ था बिकॉज चैट जीपीटी का इमेज मॉडल वाज नॉट वेरी great. So maybe 6 months back, a year back, I used to like Gemini more. जब Nano Banana just आया था, Gemini was doing a better job. But now I think OpenAI is catching up. And see, अब ये Gemini ने बनाया है, and it is not bad, I would say. It is not bad. ये Python लिस्ट की एक चीट शीट है. तो what is the list, क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट को, लिस्ट मॉडिफिकेशन कैसे होता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे होता है, नॉट बैड, नॉट बैड, राइट? इट इज गुड. बट लेट्स सी द क्वालिटी ऑफ चैट जीपीटी नाउ. ठीक है, इट इज टेकिंग अ कपल ऑफ मोर सेकेंड, बट यू विल बी अमेज्ड विद द आउटपुट, राइट? बहुत क्लीन और थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में बना के देगा, राइट? एंड दिस इज द आउटपुट विच आई कैन एक्चुअली टेक अ प्रिंट आउट एंड स्टिक इन माई रूम, राइट? तो इफ यू सी केयरफुली, लिस्ट इन पाइथन की एक चीट शीट है. लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं पूरा एग्जांपल के साथ उसने बना के दिया है. एक एम्प्टी लिस्ट ऐसे बनती है, नंबर्स वाली लिस्ट ऐसे बनती है. इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, सो इन पाइथन टू हैव इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है. स्लाइसिंग के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स वो दिया है, राइट? यू हैव लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. सो यू सी हाउ यूजफुल दिस इज. तो मेरे को ये लिस्ट जो टॉपिक है, मे बी दिस इज अ टॉपिक ऑफ लेट्स से 2 to 3 लेक्चर्स. तो 2 से 3 लेक्चर्स का पूरा समरी मुझे एक पर्टिकुलर शीट में अगर मिल जाए, एंड आई कैन मेक नोट्स फॉर माई सेल्फ. मैं एक छोटी सी बुक बना सकता हूँ जिसमें आई हैव दिस वन पेजर काइंड ऑफ नोट्स दैट आई कीप फॉर एवरी सब्जेक्ट, एंड दैट विल रियली बी हेल्पफुल, राइट? तो instead of using image generation for random tasks like this, use it for something like this that is really cool, राइट? एक और कूल चीज दिखाता हूँ. सो फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू यूज द पावर ऑफ जनरेटिव एआई फॉर लेट्स से थिंग्स लाइक मार्केटिंग, फॉर सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट, पैसे भी तो कमाने हैं ना. पीपल आर लाइक, सर आप ये सब बता रहे हो, हमें बताओ कि एआई से पैसे कैसे कमाए, राइट? So a lot of people say that every time I take a workshop around AI, people are like कि सर इससे पैसे कैसे कमाते हैं वो बताओ सर. ठीक है, हमें पैसे कमाने, राइट? So again, you need a product uh, to be able to sell that. And इनिशियली जहाँ पे हमें प्रोडक्ट फोटोशूट वगैरह करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता था, नाउ एआई डज अ रियली रियली गुड जॉब on it, right? So today we'll create an infographic around some marketing content, some posters. तो हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करने के लिए, इंस्टाग्राम के लिए एडवर्टाइजमेंट्स बनाएंगे. ठीक है, सो यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर टुडे. हम किसके लिए एड्स बनाएं, आप बताओ. वन पेजर पोस्टर फॉर योर प्रोडक्ट. The last time we had tried it for burgers, coffee,
ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको, मे बी पिछली बार के कुछ एग्जांपल्स। यूजीएसओटी का बोल रहे हैं, ठीक है। तो So we had created some posters like this, and जब आप Canva AI use करते हो, so the good part is this is AI generated content, but I can edit it. So this is really cool, right? मतलब आप Chat GPT वाला image unless and until you have that Canva वाला connector in GPT, then you can do it. But otherwise, this is really cool कि आप AI से आप कुछ generate कर रहे हो और फिर उसको edit भी कर पा रहे हो, मतलब उसके ऊपर का text edit कर पा रहे हो. That is really cool according to me, है ना? तो हमने कॉफी के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट्स बनाई थी, एंड यू कुड एक्चुअली एडिट दिस. वी हैड आल्सो डन फॉर बर्गर्स. वी हैड आल्सो डन फॉर बर्गर्स, राइट? सो दिस इज क्रिएटिंग created using AI, and then I could actually edit it as well, right? So cool stuff, big burgers and stuff like that, right? Want to create something today? Let's go back. You want to create something cool? Any product idea anyone has? किसके लिए हम बना सकते हैं? यूजीएसओटी के अलावा बताओ, बिकॉज कार, टी शर्ट, स्किन केयर ब्रांड, स्किन केयर, किसी ने फेस वॉश बोला था, ठीक है, लेट्स डू फेस वॉश. लेट्स डू फेस वॉश, ठीक है. बट एआई ने हमें बहुत आलसी बना दिया है, सो एआई से इमेज जनरेट करने वाला प्रॉम्प्ट भी एआई ही लिखेगा, राइट? दैट इज हाउ लेजी एआई हैज मेड अस. सो आई विल यूज एआई टू जनरेट अ फेस वॉश पोस्टर, बट उस पोस्टर का प्रॉम्प्ट भी मैं थोड़ी ना लिखूंगा. Help me write a prompt for creating a face wash commercial poster. Um, mm, 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 for अगर हम फेस वॉश बना रहे हैं तो उसका कुछ एक स्पेशलाइज, मतलब कुछ कुछ होना चाहिए उसका स्पेशलाइजेशन, राइट? सो एक्ने, इट टेक्स ऑफ योर acne or adds glow, right? So for face glow and acne reduction, something like this, ठीक है. तो एडवर्टाइज कर रहे हैं तो कुछ होना चाहिए, नहीं? ठीक है, तो प्रॉम्प्ट आप ले लो. अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दे दी. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक दिस प्रॉम्प्ट, okay, and I'm going to go to Canva. I'm going to describe my poster. ठीक है, सो यू विल सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव प्रॉम्प्ट. ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है. तो जब आप कोई भी बड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखते हो, एट द एंड ऑफ इट यू कैन जस्ट राइट नेगेटिव प्रॉम्प्ट. तो प्रॉम्प्ट में हम वो चीजें लिखते हैं जो चीजें हमें चाहिए, राइट? बट लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, जब हम ह्यूमन पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते हैं, यू माइट हैव सीन कि 5 की जगह 6 फिंगर्स बना देता है एआई. हैव यू सीन दोस काइंड ऑफ थिंग्स? फिंगर्स रॉन्ग है, या फिर मतलब कुछ कुछ होता है जहाँ पे द ह्यूमन बॉडी इज नॉट करेक्ट, राइट? एक्स्ट्रा फिंगर्स आ गए या फिर ईयर मिसिंग है और समथिंग लाइक दिस. तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट इज टू इंश्योर कि ये सारी गलतियां मत करना. ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स डोंट डू दैट. आई नो कि हो सकता है इसने एक इंसान का पोर्ट्रेट बना दिया जिसमें इसने एक्स वाई जी ये गलती कर सकता है. ये तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट होता है. You write the whole prompt in what you want, and in the negative prompt you write what you don't want, right? So what I don't want, I don't want low quality, I don't want, हाँ कभी कभी कार्टूनिश इमेजेस बना देता है एनिमेटेड स्टाइल में. मुझे वो कार्टूनिश इमेज नहीं चाहिए. ओवर सैचुरेटेड कलर्स नहीं चाहिए. ब्लरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए. फेक लुकिंग एक्ने रिमूवल नहीं चाहिए, राइट? ये सारी चीजें नहीं चाहिए. देखो, एक्स्ट्रा लिम्स है ना, दो की जगह यू हैव मोर फिंगर्स, मोर हैंड्स, मोर लेग्स, वो सारी चीजें नहीं चाहिए. So you add a negative prompt as well, and we paste this, right? And I'm sure you have used all of these different kind of tools, but we'll just play around with it. I think बहुत सारे लोगों ने शायद म्यूजिक ट्राई नहीं किया होगा, so we'll also do a quick creation of music as well. And the good part about Canva AI is you get multiple designs at once, है ना? तो आपको एक साथ 4-5 डिजाइन मिल जाती है. Then you can shortlist whichever you like the most. So that is really really good. Hope this comes out good. ठीक है.
Okay, okay. Google Flow Music, yes. So I'm going to show you a demo of Google Flow Music. Suno AI, yes, we'll do a demo of Suno AI as well. Uh, ठीक है, ठीक है. So it has given me some posters here that again I can edit. ठीक है. So can I change this title? Yes. Can I change the subtitle? Can I change the whatever promotional line? You can do that, right? And then I have got some options again. ठीक है. ठीक है, नॉट गोइंग अगेन, हम कोई मार्केटिंग एआई का वर्कशॉप नहीं कर रहे, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दिस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई कैन ऑल्सो शो अ सैम्पल वीडियो एज वेल. अच्छा, कितने लोगों को ये चीज पता है दैट इफ यू हैव अ जियो सिम, if you have a Geo SIM, you can get Google AI Pro for 18 months free. If you have a Geo SIM, आप सर्च करो इसको, Google Gemini offer, Google Gemini Geo offer, and you get a pro plan of Google Gemini free for 18 months. Right? It's absolutely free. All you need is आपके घर में अगर किसी के पास भी जियो का सिम है, या फिर किसी और के पास है जो यूज नहीं करता है एआई, सो यू कैन क्लेम दिस, राइट? जस्ट क्लेम द ऑफर एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो बेस्ट इज आपको वीडियो जनरेशन मिल जाता है, VO 3.1. यू गेट 5 TB ऑफ स्टोरेज, 5 TB ऑफ स्टोरेज, राइट, फॉर फ्री. Notebook LM and a lot of other things as well, right? My favorite is 5 TB of storage and then access to a VO 3.1, right? तो मैंने ऑलरेडी इसको क्लेम कर लिया. आई हैव नॉट पेड अ सिंगल रुपी. सो यू ऑल कैन ऑल्सो क्लेम एंड यू विल सी कि आपके यू विल गेट अ प्रो अकाउंट बेसिकली. ठीक है, देन यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जो आपका जेमिनाई का इंटरफेस है, उसी के अंदर आप वीडियोस भी बना सकते हो. हैज एनीवन ट्राइड इट? In the same Gemini interface, you can also create videos. Claimed it's nice. नाइस. इन द सेम जेमिना इंटरफेस, जो आप नॉर्मल जेमिना का इंटरफेस है, उसी के अंदर वीडियोस बना सकते हो. तो कुछ कूल वीडियो बनाते हैं. आइडियाज दो, आइडियाज. आई विल टेक आइडियाज फ्रॉम यू. आई टेक आइडियाज फ्रॉम यू. क्या बनाना? यू कैन टेल मी. यू कैन टेल मी, गिव मी सम कूल आइडियाज. BMW. सो वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, जेमिनाई में ऐसी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर नेम्स, ब्रांड्स यूज करते हो, तो वो कभी कभी मना कर देता है. क्यों? क्योंकि फॉर कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज. फॉर एग्जांपल, स्पाइडरमैन इज ओन्ड एज अ ट्रेडमार्क और एज अ कॉपीराइट बाय सम कंपनी. तो मैं नहीं बोल सकता कि स्पाइडरमैन का आप ये वाला मूव बना दो, तो वो मना कर देता है. करेक्ट? बिकॉज these are private entities owned by someone, right? Maybe whatever, Marvel, DC ओन करता है इन कैरेक्टर्स को, तो मैं नहीं बना सकता उनके शॉट्स. बट यू, हाँ, रेसिंग बना सकते हो. डॉग फाइट बिटवीन, ओके, डोरेमोन. डोरेमोन, ओके. विराट कोहली प्रोमोटिंग 1-8, ओके. मैं अगेन विराट कोहली बोलूंगा तो वो नहीं बनाएगा, वो बोलेगा कि यू आर यूजिंग सर्टन नेम्स. बट अगर मैं क्रिकेटर बोल दूंगा तो वो बना देगा. Dismantle watch, convert to fully functional watch. Okay. Horror video. I'm just waiting for the right idea to strike. ठीक है, आप लिखते जाओ चैट में. I'll pick anyone. I'll pick anyone. Horror video, dog fight, rocket ship. Okay, ठीक है. Um, 3D animation video, a stadium cricket match. Okay. So should we do this? Should we do? Should we? I think दो तीन लोगों ने बोला cricket वाला विराट कोहली. So we'll not use the term विराट कोहली. We will create a video. Let's create a video. You can create up to 10 seconds की वीडियो है ना. So create a 10-second वीडियो जहाँ पे बैट्समैन, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट हियर, hitting a long stylish six, right? The team starts, नहीं, अगर सिक्स मारते तो क्या टीम से, हाँ, टीम तो सेलिब्रेट करेगी. द टीम सेलिब्रेट्स and the audience goes
क्रेजी। ठीक है, थोड़ा सा स्टेडियम में माहौल बन जाएगा, ठीक है। एंड द ऑडियंस इन द स्टेडियम गोस क्रेजी, समथिंग लाइक दिस। अगेन क्रिएट द प्रॉम्प्ट बाय चैट जीपीटी। ठीक है, लेट्स आल्सो सी कि क्या हम अगर ऐसे ह्यूमन बहुत नीव प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं तो क्या हमें फिर भी क्वालिटी आउटपुट्स मिलते हैं। लेट्स ट्राई अ वेरी बेसिक प्रॉम्प्ट आई एम गिविंग, राइट? बैट्समैन, राइट, हिटिंग अ लॉन्ग स्टाइलिश, द टीम सेलिब्रेट्स एंड ऑडियंस इन द स्टेडियम गोस क्रेजी। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, अगर हम बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रॉम्प्ट नहीं लिखते तो भी क्या हमें अच्छे आउटपुट मिल सकते हैं। सो विल डू दिस, ठीक है। यूज डिफरेंट मॉडल, ओके, या यू चेंज योर मॉडल्स। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? सो ऐसा तो नहीं है कि हमने क्रिकेट का बना दिया तो फुटबॉल के फैंस ऑफेंड हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं है, राइट? सो पैरेलली जब तक वो ये बना रहा है, विल डू द सेम फॉर फुटबॉल एज वेल, लेट्स डू दिस, राइट? सो क्रिएट अ 10 सेकेंड वीडियो, ठीक है। स्कोरिंग अ गोल, स्कोरिंग अ गोल का भी बना सकते हैं एक्चुअली, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फुटबॉलर स्कोरिंग अ गोल, ठीक है। इज इट रेडी? ओके ओके, इट इज रेडी, पहले देख लेते हैं। वी हैव गॉट सम आउटपुट फ्रॉम जेमिनाई हियर, एंड It's a massive hit. That is going all the way into the crowd for six. What a sensational shot. बट इसमें मैंने इंडिया मेंशन करना भूल गया, ठीक है, तो फॉर फॉर सम रीजन। It's a massive hit. That is going all the way into the crowd for six. What a sensational shot. ठीक है, सो या फॉर सम रीजन द बायस इज टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, मे बी बिकॉज दे हैव वन मोर वर्ल्ड कप्स और व्हाटएवर, ठीक है। सेम हम एक बार फुटबॉल का ट्राई करते हैं, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। स्कोरिंग अ गोल, ठीक है। टीम सेलिब्रेट्स एंड द ऑडियंस गोज क्रेजी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दिस विल जनरेट, यस, टू सो वो वाला सेलिब्रेशन आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी विल गेट अ गुड आउट, एंड यू विल हैव इवन मोर फन वंस वी स्टार्ट क्रिएटिंग म्यूजिक, ठीक है। तो हम म्यूजिक बना सकते हैं, वी कैन डू सम कूल स्टफ, वी कैन क्रिएट म्यूजिक। दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट इन द प्रीवियस बूट कैंप एज वेल। तो हम एक बार म्यूजिक का भी देखेंगे कि हाउ यू कैन डू म्यूजिक। सो देयर आर टू टूल्स बिफोर आई स्टार्ट विथ जनरेटिंग। पहले मैं आपको टूल्स बता देता हूँ। सो यू कैन यूज suno.ai, also called suno.com, both are one and the same. So you can use suno.ai and you can use flow music, flowmusic.app, both are great, ठीक है, दोनों भी बहुत अच्छे हैं म्यूजिक जनरेशन के लिए, एंड बोथ गिव यू इनफ फ्री क्रेडिट्स टू एक्सपेरिमेंट विद जनरेटिंग फ्री म्यूजिक, ठीक है। um, इसका एक बार वीडियो बन जाने दो एंड देन वी कैन डू अ बिट अराउंड म्यूजिक। कूल कूल कूल। So the thing with video is why I'm not showing you any other tools other than Gemini is uh, I hope you all know कि video generation with AI is an expensive task, right? Takes a lot of credits. So image takes consumes much more of computation as compared to text, and then वीडियो डज इवन मच मोर देन एन इमेज। तो बहुत सारे जो अलग अलग टूल्स है, राइट, वेदर इट इज सिंथेसिया, सिंथेसिया है या फिर क्लिंग है, क्लिंग डॉट ए आई, ऑल ऑफ दीज टूल्स आर अवेलेबल, जस्ट दैट की किक्सफील्ड हो गया, सेडांस हो गया, यस यू ऑल आर राइट। सो ऑल ऑफ दीज डिफरेंट मॉडल्स एंड टूल्स आर ऑल गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज दे गिव यू वेरी वेरी लिमिटेड फ्री क्रेडिट्स, मतलब शायद आप एक वीडियो मुश्किल से बना पाओगे, उससे ज्यादा बना नहीं पाओगे। बट या यू कैन ट्राई आउट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट प्लेइंग। शायद एक वीडियो तो बन जाएगा शायद फ्री ट्रायल में, है ना?
ठीक है. So we have a video for our football wala prompt, and let's see how good or bad it is. It's a massive hit that is going all the way into the back of the net in truly sensational goal. What a sensational shot. ठीक है. So fair enough. You guys can also try stuff like this, and in the same interface. Why was the sound cricket hitting? हाँ, ये मेरे साथ पिछली बार भी हुआ था कि पिछली बार जब मैंने दो वीडियोस बनाए थे तो सेकंड वीडियो में पहले वीडियो का म्यूजिक शेयर हुआ था. सो आई डोंट नो इफ दिस इज अ बग और समथिंग, बट दिस इज द सेकंड टाइम आई एम सीइंग दिस. It's a massive hit that is going all the way into the back of the net in truly sensational. कि वो साउंड शेयर हुआ है. दिस इज द सेकंड टाइम आई सॉ दिस. एनीवेज, टाइम टू क्रिएट सम म्यूजिक, टाइम टू एंजॉय with some beats, and हम गाना बनाएंगे. So we'll do two samples. Okay, now suno. ठीक है. You can just write a prompt and create any kind of song that you want, right? And when I'm saying prompt, the prompt doesn't even have to be lyrics. आप कुछ भी, जैसे मुझे एक थीम दे दो कि किस पे आपको गाना बनाना है, बताओ. You give me a song. What is the purpose of the song? You tell me in the chat. I'll pick one idea. I'll pick one idea. नहीं, अरिजीत सिंह तो ऐसा सिंगर का नाम मत बताओ. टेल मी मोटिवेशनल. ओके, मोटिव. ओके, मल्टीपल स्टूडेंट्स आर सेइंग मोटिवेशनल सॉन्ग. सो आई कैन जस्ट राइट अ वेरी बेसिक प्रॉम्प्ट, राइट? वन लाइनर प्रॉम्प्ट से भी आपका बन जाएगा, राइट? क्रिएट अ मोटिवेशनल. बट किसके लिए मोटिवेशन? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? मोटिवेशन बहुत जेनरिक हो जाएगा. मोटिवेशनल सॉन्ग फॉर जिम. ओके, क्रिएट अ मोटिवेशनल सॉन्ग फॉर जिम. ओके, एंड इतना इतना यू कैन से इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट से भी क्या गाना बन सकता है? तो बन सकता है. डू अ डेमो. विल डू वन डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आल्सो, बट लेट्स सी इफ इट क्रिएट्स, राइट? Raise the trophy. So these are all some songs which again have been created with a simple prompt like this. ठीक है. तो यहाँ पे आपको जितने भी गाने दिख रहे हैं, why don't you use whisper flow? We can, Ashish. I have used it in the past. This is my work laptop, so I don't have whisper flow installed on this. But yeah, genuinely wonderful, wonderful tool to use. ठीक है. So let's play something from the past. जब तक हमारा आज का गाना बनता है, तो कुछ पिछले बार जो गाने बने हैं उनको प्ले करके देखते हैं. रेज द ट्रॉफी. यस, हिंदी में भी बनता है, एंड आई क्रिएट एंड शो यू इन हिंदी एज वेल. तो तब तक हम देख लेते हैं हमारा सॉन्ग रेडी हुआ कि नहीं, राइट? सो लाइब्रेरी. या आई थिंक दिस इज द सॉन्ग. जिम के लिए मोटिवेशनल सॉन्ग बना रहे हैं, राइट? सो दैट इज डन. Feel
beat is crazy, right? So you can do cool stuff like this. ठीक है? So I want you all also to try. So this is सुनो. Anyone wants to try in Hindi? हिंदी में और भी crazy हो जाएगा. You want to try in Hindi? You do something in Hindi. ठीक है? पहले मैं आपको एक फुल सॉन्ग दिखाता हूँ हिंदी में. ठीक है? अम, हिंदी में हिंदी में हमारे सॉन्ग्स कहाँ पे? लेट मी फाइंड द सॉन्ग. सो देर आर मल्टीपल सॉन्ग्स. आई लव स्लो म्यूजिक मोर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हिंदी में मुझे एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी लगती है. आई शो यू वन सॉन्ग. ठीक है? वन रैप सॉन्ग. एनीवन वांट्स टू हियर अ रैप सॉन्ग? ऑल दिस सॉन्ग्स आर क्रिएटिंग यूजिंग प्रॉम्प्ट्स. यहाँ पे जितने भी आपको सॉन्ग दिख रहे हैं, these are all my songs I've created using prompt. Do you want to hear a rap song? Okay. So we listen to a rap song again, creating entirely using prompts. So it's really good. ठीक है? You won't believe that this is AI, but it is AI, pure AI, right? Prompt भी AI से है और गाना भी AI से है, सब कुछ AI से. ठीक है? Yeah, 2000 chicks, सपनों की उड़ान, दिल से निकली बात. Let's go. गली से निकला हूँ, सपनों को साथ लिया, लोगों ने रोका बहुत, मैंने हर वार पिया. कहते थे रुक जा, तेरे बस की बात नहीं. आज वही पूछते हैं भाई तेरी रात नहीं. जेब थी खाली मगर हौसला था करोड़ों का. रास्ता लमसही, इरादा था पहाड़ों सा लंबा. सही इरादा था पहाड़ों सा. गिरा कई दफा फिर उठकर चला मैं. हार को भी जीत की सीढ़ी बना मैं. मेहनत की आग में खुद को जलाया, मेहनत की आग में खुद को जलाया. हर दर्द को मैंने गीतों में सजाया. अब जो भी दिखता है ये यूं ही नहीं मिला. हर कतरा पसीने का सपना बनकर खिला. जो भी बोले बोलने दो, अपने सपनों को उड़ने दो. कल का डर अब छोड़ दिया, आज को मैंने पकड़ लिया. अपना टाइम अभी, अपना टाइम अभी, दिल में है आग और मंजिल है सभी. अपना टाइम अभी, अपना टाइम अभी, रुकना नहीं अब चाहे आए कभी. हाथ ऊपर करो, साथ मेरे चलो. जो भी सपना है उसको सच में बदलो. अपना टाइम अभी, उसको सच में बदलो. नक्शा नहीं था कोई रास्ते. ठीक है. This is cool, right? Song for India's Got Latent. Okay. Anyone wants to try? You can. I'm giving away the song to you. ठीक है? You can take this song. And by the way, all the songs that you create ideally get your tag. And क्योंकि AI से generated है, तो same गाना दोबारा exact same song कभी नहीं बन सकता, right? Even if someone else gives the same prompt, तो भी वो exact ये गाना कभी नहीं बना पाएंगे. So in a way you can say that you are also the owner of the song. And ऊपर आपके पास publish करने का button भी है. You can also publish this song and other people can hear it, right? So it's very cool. You can make such cool songs, right? Now we'll do one more. Okay, of course we'll do one live. और क्योंकि हमने एक रैप वाला कर लिया है, हिंदी वाला में ज्यादा मजा आ रहा है, सो we'll do one more in Hindi. But how about we do it maybe um, either a heartbreak song or a romantic song? You guys tell me. थोड़ा सा बॉलीवुड. Either we do a romantic song or we do romantic song. Okay, we can do a romantic song or a heartbreak. You decide. या तो दिल दिल जुड़ेंगे या तो दिल टूटेंगे. ठीक है? दोनों में से एक. We do either of that. Romantic. We'll do a romantic then. Let's not do a heartbreak. Someone said कि ठीक है. We'll do a romantic. For this one I'll use ChatGPT क्योंकि मैं इस बार lyrics दूंगा. ठीक है? This time I'm going to give the whole lyrics of the song. So for example कोई writer है. If you are a songwriter, you want to write your whole song, but you cannot sing it because you don't have a studio. So आप अपना पूरा गाना लिख लो और AI can sing it for you, right? So write a Hindi song. ठीक है? Romantic. Write a Hindi romantic song, full lyrics. ठीक है? And will AI be able to write the whole lyrics? तुम मेरी सुबह is the title of the song, and then it has given you whatever, जब से तेरी आंखों में देखा है and stuff like that. So it has given you the whole lyrics. ठीक है? So what I'm doing, of course, अब मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ कि मैं खुद का गाना पूरा लिख सकूँ, तो मैं पूरा गाना मैंने जीपीटी से लिखवा दिया. So my song is ready. Now I take this song, I go to Flow Music, I paste this. Okay, I paste this. So this is more like my producer for the song. And
नाउ अभी रैंडम गाना नहीं बनेगा, राइट, मेरे लिरिक्स पे गाना बनेगा। सो आई एम पुटिंग अप दिस एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड, बहुत टाइम भी नहीं लेता है, इट डज नॉट टेक अ लॉट, मे बी लाइक 30 seconds, right? So it will create the song for you quick, and it is good. I have tried multiple times. Output is really really good. Both are great. Both are great. मुझे फ्लो म्यूजिक से कुछ hits मिले हैं for myself, so I've got some good songs that people really enjoyed. So you can see कितना fast बना रहा है, 50% is already done, and using my lyrics, ऐसा नहीं कि randomly बना रहा है, done, done, right? दो versions बनाए, अगेन दो versions बनाए, जब so I से checked. तेरी आंखों में देखा है जहां, हर रास्ता लगता है अपना सा यहाँ। तेरी हंसी में जैसे सावन की फुहार, दिल ने लिखी बस तेरे नाम की बहार। चांद तेरी बातों से रोशन लगे, रात भी तेरे होने से आसान लगे। सांसों की हर धड़कन यही कर रही, तू मिले तो हर कमी पूरी लगे। चले जहां भी हाथों में हाथ हो, हर एक पल में बस तेरा साथ हो। दुनिया भुला दूं तुझको पालूं अगर, और कोई अब मेरी बात हो ना हो। तुम मेरी सुबह तुम मेरी शाम हो, दिल की धड़कन का पैगाम हो। तुमसे ही रंग है तुमसे ही रोशनी, मेरी हर दुआ का अंजाम हो। तुम मेरी हंसी तुम मेरा ख्वाब हो, मेरे हर सफर का जवाब हो। झूले जो मांगा था बरसों पहले, लगता है तुम ही एहसास हो। बारिश की बूंदों में तेरा ही। Yes, so again, new singer in the house, guys. At least हम इससे बादशाह को तो बीट कर ही सकते हैं, है ना? If not, we can eliminate a few people from the industry. Yes. So you can create your own songs, have a lot of fun, and the output is really good. मतलब you will believe that this song is better than a lot of other songs that you might have heard, right? तो आप please hesitate. अरे I'm just kidding, guys. Don't worry. नहीं नहीं, I'm just kidding, guys. No hate to anyone. मजाक कर रहा हूँ. ठीक है, एनीवेज, व्हाट शुड वी डू? अच्छा, कुछ कूल गेम्स बनाते हैं, या फिर कुछ कूल वेबसाइट बनाते हैं। तो अभी तक आपने क्या यूज किया? हैव यू गाइस यूज्ड लवेबल और समथिंग लाइक दैट? हैव यू यूज्ड लवेबल, और हैव यू यूज्ड एनी अदर टूल्स? क्लाउड यूज किया है, लवेबल यूज किया है, ओके, इमर्जेंट यूज किया है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज टूल्स, समवन मेंशन्ड एंटी ग्रेविटी, वेरी नाइस। तो सब some of these tools you would have used in an online interface like this, ठीक है। Lovable आपने यूज किया होगा, या इमर्जेंट भी यूज किया होगा, तो you would have used in an online interface, ठीक है। बट जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट करने जाओगे ना, so you need to set up all of these things, yeah, on your local, so you will be using your CLI and stuff like that, आप ID यूज करोगे, right? So you can try out anti-gravity. For those of you who haven't tried it yet, आप एंटी ग्रेविटी कोई भी टूल यूज कर सकते हो। वैसे तो हमें प्रॉम्प्ट दे के वेबसाइट बनानी है, ऐप बनाना है, तो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। बट आई एम जस्ट सेइंग कि सो एंटी ग्रेविटी विल गिव यू अ लिटिल बिट मोर कंट्रोल, या कर्सर आप यूज कर रहे हो तो आपके पास थोड़ा ज्यादा कंट्रोल आएगा। एंड देन यू हैव मोर वर्जन्स ऑफ दीज टूल्स, राइट? उसका आईडी भी आता है, उसका CLI भी आता है, राइट? बट इफ यू गो फॉर द basic version, so just install the app, so locally install हो जाएगा, and instead of using it in the browser, you will have an app on your system, ठीक है। So this is loading, ठीक है, and you can again quickly select models that you want and give prompts and do stuff like that, right? So mm, cool. So a quick we should do a quick demo, and we'll create something in anti-gravity. You can use any tool. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि anti-gravity use करो, कुछ भी use करो, whatever you are comfortable with. But let's try to do something interesting. Uh, मुझे एक्चुअली हैंड जेस्चर्ड वाले गेम्स दिखाने हैं, बिकॉज एनीथिंग एल्स तो बहुत इजीली बन ही जाता है ना। AI, यू गिव एनी प्रॉम्प्ट, बेसिकली आई विल डू इट। लेट्स डू समथिंग विद हैंड सिमुलेशन, मतलब मैं अपना हैंड कंट्रोल करके कुछ कर पाऊँ, राइट? सो what can we build? What can we build? What can we build?
Um, so I want to use my hands to control the character maybe. Or अच्छा, let's do this. Should we try to create, कितने लोगों ने फ्रूट निंजा खेला है? Anyone has played fruit ninja? Can we try to do fruit ninja but using actual hands? मतलब मैं ऐसे fruits कट करूंगा, कैमरा enabled होगा, there will be fruits coming, and then I will cut fruits with my fingers. Should we try to do that? Should we try to do that? So camera enabled game होगा. तो नॉर्मली तो आपने खेला ही होगा, यू कैन टच और यू कैन यूज योर माउस. बट नाउ आई विल डू कि विदाउट टचिंग माई कीबोर्ड आई विल स्टिल बी एबल टू कट दोस फ्रूट्स, राइट? क्रिएट अ क्रिएट हैंड gesture control root ninja game. um, will need camera access. um, I should be able to cut fruits using my fingers, right? Again, gesture control. ठीक है, आई एम गिविंग. सो आई हैव यूज्ड एंटी ग्रेविटी इन द पास्ट, राइट? तो आप अब बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट नहीं लिखोगे, आप उसको पूरा जीपीटी से रिफ्रेम नहीं भी करोगे तो समझ जाएगा वो, डोंट वरी. हैंड जेस्चर कंट्रोल फ्रूट निंजा गेम विल नीड कैमरा, आई शुड बी एबल टू कट फ्रूट्स विद माय फिंगर्स. देखते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज ऑल अगेन रनिंग लोकली. तो एज अ डेवलपर, जैसे आप कमांड चलाओगे, आप सीएलआई यूज करोगे, सो एंटी ग्रेविटी डज all of that for you. It will run locally on my system, and then if I want, I can deploy it, right? तो सबसे पहले ना, एंटी ग्रेविटी आप कभी भी यूज करोगे तो सबसे पहले वो एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाता है, राइट? सो इट विल थिंक एंड मेक अ प्लान, एंड देन यू हैव टू अग्री. तो थिंक ऑफ इट लाइक योर एजेंट, ठीक है? जैसे इसने बना दिया ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान, राइट? एंड इट इज आस्किंग फॉर मी टू प्रोसीड. तो थिंक ऑफ यू एज अ डेवलपर. या क्लॉड विल डू द सेम, राइट? एंड इट विल क्रिएट अ प्लान फॉर यू. आपको अभी अप्रूव करना है इसको. रूट निंजा गेम एंटायर यूजिंग हैंड जेस्चर डिटेक्टेड बाय द यूजर्स कैमरा. वो कुछ कंपोनेंट का आर्किटेक्चर इस तरीके से फॉलो करेगा. एंड अभी के लिए वी डोंट हैव टू गो इनटू द टेक्निकल डिटेल्स, बट आइडियली एज अ डेवलपर यू विल नीड टू रीड द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, बिकॉज आपको ये बताना है कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या आपको ढंग से समझी है. इफ यू थिंक there is anti-gravity required, no, 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 it does not require any premium or any paid. You can use it for free. यू कैन यूज इट फॉर फ्री, ऑफ कोर्स. जो आपको जो प्रीमियम मॉडल्स यूज करने हैं, आपको क्लॉड का लेटेस्ट ओपस 4.8 यूज करना है, देन यू नीड दोस टोकन्स. बट देर आर एम्पल. जैसे मैं अभी जेमिनाई 3.5 फ्लैश यूज कर रहा हूँ, सो इट इज फ्री. इट इज फ्री एंड इट विल गिव यू डिसेंट आउटपुट्स. इट विल गिव यू डिसेंट आउटपुट, राइट? सो नाउ दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन प्लान. मैंने प्रोसीड कर दिया एंड क्योंकि मैंने प्रोसीड कर दिया, तो नाउ इट विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, राइट? तो वो एक एक इट विल स्टार्ट राइटिंग कोड फॉर मी, राइट? यू कैन सी कैमरा डॉट जेएस. तो कोई भी फाइल आप ओपन करोगे तो आपको उसका सारा कोड भी दिख जाएगा. राइट नाउ वी आर नॉट मच वरीड अबाउट द कोड फॉर नाउ, बट इट इज डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर अस, ठीक है? एंड एक बार ये चल जाएगा तो दिस विल बी रनिंग लोकली ऑन योर सिस्टम, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो. एंड देन यू कैन ऑल्सो डिप्लॉय इट. Now, because Google also owns Firebase, which is again a service that you can use for deployment, तो आप फ्री में उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो. बट you will get some domain like this, and you will get some domain. जैसे मैंने ये नियॉन फिस्ट फाइटर ऐप बनाया था, तो आपको कुछ इस तरीके का वेब डॉट ऐप इज अगेन Firebase का domain, so you will get some random URL like this and you can host it as well. तो ये नियॉन फिस्ट फाइटर मैंने बनाया था जेस्चर कंट्रोल फाइटिंग के लिए, बट वो हाँ कैमरा डिटेक्ट हो रहा है, सो यूजिंग जेस्चर यू कैन एक्चुअली फाइट. नाउ दिस इज राइट नाउ इन हार्ड मोड. अभी ये हार्ड मोड पे है तो मुझे वो मारने का मौका नहीं दे रहे, बट अदरवाइज यू कैन यूज योर हैंड्स टू fight, right? So it was again a gesture control game that I had built in one of the previous sessions, and we are trying to build something similar. So it needs access to run certain commands. Yeah, it is amazing. So um, कर सकते हो, आप कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो राउंड. Yes, it is using JavaScript. So I think it's almost done.
I think it's almost done. Navigate to, is it? So it has given you the steps, right? अभी locally वो local host 8082 पे चल रहा है. I'm just checking. Let me just check. Agent needs access. I think it is trying to open the URL in my browser. I can do it myself. Okay. तो आई थिंक हमारा गेम बन चुका है. कैमरा एक्सेस नीडेड होगा, राइट? एनेबल कैमरा. एनेबल कैमरा, ओके. मैं जूम का कैमरा ऑफ कर देता हूँ फॉर सम टाइम, और मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ. सो इट इज एबल टू ट्रैक माई फिंगर, एज यू कैन सी. राइट में इट इज एबल टू ट्रैक माई फिंगर, सो आई स्टार्ट ट्रेनिंग. ओके, इट इज वर्किंग फाइन. हमें बॉम्ब्स अवॉइड करने. यस, इट इज वर्किंग गाइस. यू अवॉइड बॉम्ब्स. आई थिंक कुछ हम ज्यादा मिस कर रहे हैं. मतलब फ्रूट्स मिस करने के बाद शायद यू लूज द गेम, बट इट इज गुड. Oops, bomb avoid gun. You can do all such cool things using anti-gravity, using other tools. And 5 minutes भी नहीं लगे, I think, right? In less than 5 minutes, you were able to build this. Right? You can do all of these things. So you can build such uh, cool things, right? I think I did a quick demo. Someone will try to visit your local host. हाँ, तो ये जो है, you cannot use this same URL on your browser, तो वो नहीं चलेगा. Of course, it is currently running locally on my system, and then I can just hit a command to deploy, and then it will deploy on Firebase, which is again a service of Google. um, लवेबल वगैरह में आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि वहीं पे बन जाता है, एक बटन में डिप्लॉय हो जाता है. यहाँ पे भी हो ही जाएगा, बट अगेन ऑन सम एक्सटर्नल server. Nah, Netlify, you can use any of those tools, right? So I wanted to do a quick demo of this, just to show you कि आप ऐसी चीजें बना सकते हो, right? Just to give you that confidence कि how easy it is. So I think we started our discussion with prompt engineering, and I was trying to tell you that quality of your output is highly. We can stop sharing here, and I can turn on my camera. Yes. So I was telling you that the quality of your output will depend on the quality of your input. And LLMs के case में that input is your prompt. So writing a good prompt is necessary. However, क्योंकि आज के मॉडल्स इतना ज्यादा ट्रेंड हो गए, इतना ज्यादा अच्छे हो गए हैं, एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन ह्यूमन लैंग्वेज, तो आप थोड़ा सा गलतियां भी करोगे. स्टिल दीज मॉडल्स आर वेरी वेरी गुड, राइट? जितना मॉडल्स बेहतर होते जा रहे हैं, उतना यू कैन मेक मिस्टेक्स एंड दे विल स्टिल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? बट वी अंडरस्टूड अ बिट अबाउट prompt engineering, zero shot prompting, few shot prompting, chain of thought prompting. देन आई टोल्ड यू वन कूल यूज केस कि इमेज जनरेशन, हम रैंडमली कुछ भी इमेजेस बनाते हैं, बट एज अ प्रोडक्टिव थिंग यू कैन एक्चुअली यूज इट टू मेक दोस चीट शीट्स, वन पेजर डॉक्यूमेंट्स, जो आप यू कैन स्टिक इट इन योर रूम फॉर रेफरेंस. वीडियो जनरेशन में आई टोल्ड यू कि इफ यू क्लेम योर जियो ऑफर, यू कैन क्रिएट 10 second videos and you can create lot of videos for free in Gemini. म्यूजिक जनरेशन में हमने देखा कि यू कैन डू suno डॉट ए आई एंड फ्लो म्यूजिक बोथ. ठीक है. एंड वी सॉ यू कैन यूज एंटी ग्रेविटी एंड अदर टूल्स फॉर बिल्डिंग एप्स. वन मोर थिंग आई विल शो यू. जो आज की पीपीटी थी हमारी, राइट? जो आज की ये वाली पीपीटी थी, this is also created using AI, right? So as a person, if I'm not using AI in every small task that I do, then I think I don't consider myself a techie, right? तो जो भी काम मैं करता हूँ, I try to use AI in all of that, and this has been created in Gamma, right? तो आप Gamma में PPTs बना सकते हो using a prompt or using some reference. So do you want me to show a demo of this as well? How you can do presentations, how you can create presentations using Gamma? Yes, okay. I'll show one of these as well. एक ये भी देख लेते हैं. तो दो तरीके हैं. There are a couple of ways how you can do, how you can create presentations using Gamma. So one is कि आप बस उसको बोल दो. Just a second. I think मेरा orientation मिस हो गया. So one is I say create new, and आपके पास कुछ options आते हैं, right? Generate using one line prompt. तो ये बेसिकली है कि आप एक prompt लिखो और पूरा presentation बन जाए, right? बट अगर आप
किसी सीरियस चीज के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, देन यू वुड नॉट वांट टू क्रिएट लाइक दिस, क्योंकि आपको यहाँ पे, हाँ, यस आई विल शेयर द पीपीटी। So for any serious purpose, usually it happens कि you are the decider for the content, right? I don't want to give the control of the content to Gamma कि मेरी पहली स्लाइड पे क्या आएगा, मेरी सेकंड स्लाइड पे क्या आएगा, थर्ड स्लाइड पे क्या आएगा. I want to control it. I don't want to give that control to Gamma. So for that reason, I prefer this second option, paste in text, right? मतलब आपको नोट्स बनाने, बेसिकली स्क्रिप्ट आप लिखोगे, पीपीटी Gamma बनाएगा, राइट? फॉर सीरियस पर्पजेस ऑलवेज यू विल हैव अ स्क्रिप्ट. तो व्हाट डू आई डू, मतलब अभी के लिए अपने पास स्क्रिप्ट लिखने का टाइम नहीं है, तो एज यूजुअल हम स्क्रिप्ट जीपीटी से लिख पाते हैं ना. सो राइट अ 10 स्लाइड्स पीपीटी स्क्रिप्ट, पीपीटी स्क्रिप्ट on the topic, on the topic machine learning, something like this. So it will write a script for you कि स्लाइड वन पे क्या आएगा, स्लाइड टू पे क्या आएगा. ऐसे ही एक आपको uh, एक 10 स्लाइड्स की स्क्रिप्ट आ जाएगी. I what I'll do, I'll just copy this. ठीक है, I'll copy this script. और ये स्क्रिप्ट में जाऊंगा अभी, I'll go to Gamma, I'll paste this script. ठीक है, स्टार्टिंग का जो अननेसेसरी पार्ट है उसको हटा देते हैं, लास्ट का जो अननेसेसरी पार्ट है उसको भी हटा देते हैं. आई थिंक स्पीकर नोट्स इज ऑल्सो नॉट नीडेड राइट नाउ. ठीक है, सो दिस इज माई स्क्रिप्ट. एंड आई कैन गो टू, नीचे से सिलेक्ट करना है समराइज जनरेट फ्रॉम नोट्स और एन आउटलाइन. सो आई चूज दिस. ये मेरे नोट्स हैं, आई वांट द पीपीटी टू बी जनरेटेड फ्रॉम दिस. कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट एडिटर. नेक्स्ट, तो मैंने नोट्स पेस्ट कर दिया. नाउ आई एम इन दिस विंडो, जहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है कि स्लाइड वन में क्या कंटेंट आएगा, स्लाइड टू में क्या कंटेंट आएगा, राइट? सो दैट इज डिवाइडेड ऑटोमेटिकली, इट इज स्मार्ट इनफ. अगर आपको लगता है कि नहीं, ये पूरी स्लाइड का जो कंटेंट है ये मुझे आगे डिवाइड करना है, राइट? सो यू कैन जस्ट पुट दिस थ्री हाइफन्स डालोगे तो ब्रेक हो जाएगा, 1 2 3. सो इट ब्रेक्स इट डाउन टू 2 स्लाइड्स. तो जहां जहां पे आपको ब्रेक करना है, यू जस्ट पुट 3 हाइफन्स एंड इट ब्रेक्स डाउन टू अनदर slide. So for now, I think I'm happy with this. Hmm, आप एक बार देख लो इसको अच्छे से, ठीक है? यू रिव्यू दिस, इफ ऑल ऑफ दिस लुक्स गुड, लेफ्ट साइड से आप चूज करो, आपको डिटेल चाहिए, कंसाइज चाहिए, एक्सटेंसिव. फाइल चूज, चूज कंसाइज. आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट इन माय पीपीटी, तो मैं कंसाइज सिलेक्ट कर रहा हूँ. राइट फॉर, तो इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है कि दिस पीपीटी इज फॉर नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स सीकिंग एन एक्सेसिबल इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, यानी बिगिनर्स के लिए है ये. तो उसने ऑटोमेटिकली वो बना दिया है. आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट, राइट? कि प्रेजेंटेशन किसके लिए, तो उस हिसाब से इमेजेस टोन वगैरह चेंज हो जाएगा. ठीक है, इंग्लिश में चाहिए थीम, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन चूज योर थीम. राइट नाउ आई हैव चोजन द रेडिश थीम which matches with upgrade. And then images किस style में आपको पसंद है, you can select. If you don't want to change all of these settings, right, just stick to default and just click on generate. But I'm just telling you कि आपके पास ये सारी चीजें कंट्रोल करने का ऑप्शन होता है. Now I click on generate and it will create a PPT for me in no time, right? मतलब you will see कि आपके सामने फटाफट 1 से 2 मिनट के अंदर मैक्सिमम ये पीपीटी जनरेट हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? जैसे चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आता है आपके सामने, फटाफट वैसे एग्जैक्टली आपके सामने पीपीटी बनती जाएगी. एंड इट इज रियली गुड. कंटेंट भी मैंने दिया है, सो आई हैव मोर कंट्रोल ऑन व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑन ईच एंड एवरी स्लाइड, राइट? तो दिस विल गेट क्रिएटेड, इमेजेस भी लोड हो रहे हैं, सो यू कैन सी इट इज रियली गुड, राइट? दिस टाइटल, इन्फोग्राफिक्स है, जहाँ पे नीडेड इट विल ऐड एन इमेज हियर. 3 main types of machine learning: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, reinforcement. फिर सुपरवाइज का भी उसने एक स्लाइड बना दिया है, अनसुपरवाइज का स्लाइड बना दिया, इट इज लोडिंग दिस इमेजेस, राइट? जैसे जीपीटी अपना टेक्स्ट जनरेट करता है, राइट, बिल्कुल उसी स्पीड से वो पीपीटी बना रहा है. सो मैन्युअली इफ आई ट्राई टू क्रिएट दिस, इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, है ना? सो दिस रियली गुड एंड एक्चुअली इट इज वेरी इफेक्टिव, राइट? सो यू कैन सी कि वो इमेजेस भी खुद से ऐड कर देता है. इमेजेस, फॉर्मेटिंग, colors and everything, it matches with your theme. एंड एग्जैक्टली जैसे स्क्रिप्ट के हिसाब से पीपीटी बनाने वालों की जॉब गई. दैट यू कैन से टू सम एक्सटेंट ये. या फिर ऐसा हो जाएगा कि um, जो पीपीटी बना रहे हैं
वो गैमा यूज करेंगे अभी, बट अगेन द क्वेश्चन इज इफ आई कैन डू इट माई सेल्फ देन आई डोंट नीड अ डेडिकेटेड पर्सन टू क्रिएट द पीपीटी. सो आई थिंक राघव दैट इज ट्रू. आई थिंक किसी ने पहले भी बोला था कि म्यूजिक आर्टिस्ट की जॉब गई और स्टफ लाइक दैट. सो इट्स रेलेवेंट फॉर एवरीथिंग. आई थिंक यू कैन क्रिएट, you can say that for coder people writing code also. You can say that for people doing music. You can say that for people doing video editing. You can say it for graphic designers, right? तो पूरा प्रेजेंटेशन ये बन गया है. और वी हैव टू अडाप्ट. यस एग्जैक्टली, यू हैव टू अडाप्ट, राइट? जैसे मैंने ये सारे टूल्स सीख लिए हैं और मैं ऑलरेडी इन सबको यूज कर रहा हूँ, सो आई एम वेरी वैल्यूएबल टू द कंपनी. क्योंकि मैं अभी कम टाइम में बहुत सारा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, राइट? आई एम एबल टू टेक दिस सेशन. आई एम एबल टू क्रिएट कंटेंट फॉर द कोर्सेज. एट द सेम टाइम आई एम एबल टू रिव्यू सो मेनी थिंग्स, क्योंकि एआई आ गया है तो आपको रिव्यू भी फटाफट हो जाता है. बहुत इतने सारे टूल्स हैं तो मेरे को आई डोंट नीड स्पेशलिस्ट फॉर ऑल ऑफ दिस. आई कैन डू ऑल ऑफ दिस माई सेल्फ, राइट? यस, वेपन की तरह यूज करना है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको करनी है, देन यू आर वैल्यूएबल टू योर कंपनी, राइट? सो डोंट वरी. आई थिंक टिल डेट इफ आई से अभी भी जो हाईएस्ट पेड पीपल है एज फ्रेशर्स, इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि ग्लाइडन सर बताओ कि इंडिया में आज की डेट में हु आर दी हाईएस्ट पेड फ्रेशर्स, ग्रेजुएट होते ही सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाते? तो दे आर स्टिल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, दे आर स्टिल software developers. So that hasn't changed with AI or without AI. In fact, the scale goes even higher, right? Now you can do more stuff. So आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है. द गुड पार्ट, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप लोगों ने वो फर्स्ट स्टेप लिया है कि आप भेड़ चाल को छोड़ के, लिविंग ऑल ऑफ दैट, कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं उसको छोड़ के, यू हैव मेड अ वाइज डिसीजन टू चूज एन आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम. क्योंकि एआई वाली इकोनॉमी में आउटकम मैटर करेगा, राइट? आपकी डिग्री कौन सी है उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो. आई विल नॉट आस्क यू कि आपकी सीजीपीए कितनी थी, आपने कौन से कोर्स पढ़े हैं, या आपकी रिज्यूमे मुझे दिखाओ. मैं आपको बोलूंगा आपने क्या किया है ये बताओ मुझे. So it is we are going in an outcome driven economy, right? For example, if I'm hiring a video editor और वो अगर एक स्कूल का बच्चा है, एग्जाम्पल वो एक स्कूल का बच्चा है या वो 18 year old पर्सन है, बट ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो एडिटर, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर हिज डिग्री. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क कि तुमने कौन सा आर्ट्स का कोर्स किया है. डज नॉट मैटर. Same goes for all of these different fields. The outcome, the skills are more important now, and that is what we will focus in this 4 year journey. So stay tuned. बहुत एक्साइटिंग चीजें हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, और सारी चीजें आउटकम ओरिएंटेड होंगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट अ मैकबुक टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो आई रिमेम्बर कि मेरे टाइम में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के मेजोरिटी स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर ही नहीं हुआ करता था. तो इमेजिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कि यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर, यू डोंट हैव अ कंप्यूटर योरसेल्फ. क्योंकि आपको पेपर तो, एग्जाम्स तो पेपर पे लिख के देनी है, सो इट डिडंट मैटर एट दैट टाइम. बट interested in loop engineering, a lot of new terms coming. Yes, Raghav. So you will get exposure to all of this. Welcome to upgrad school of technology, and we'll have a lot of fun. ठीक है, आई थिंक वी कैन एंड द सेशन हियर. इट वाज रियली रियली ऑसम. मजा आया आप सबके साथ कनेक्ट करने में. आई जस्ट शेयर माय लिंक्डइन वंस अगेन, क्योंकि आई थिंक यू ऑल वर रियली एंगेजिंग थ्रू आउट द सेशन. तो आई वुड लव टू connect with all of you guys, and you guys can connect with me on LinkedIn, and we'll stay connected. ठीक है. Awesome, awesome. Thank you guys. Thank you so much for joining in. I had a wonderful time with you all. Thank you, Ritik. Today's session was mind blowing as usual. Literally, I felt super excited after this. Thank you, Ritik. Thank you so much. Thank you, Lakshya. Thank you, Vimal. बहुत मजा आया मुझे भी. And हम मजे करते रहेंगे. ठीक है. Thank you. Wonderful, Lucky. Awesome. 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 Awesome, guys. Take care. Bye bye. See you all soon. Take care. You too. You too. Bye bye. Thank you. Thank you, Sai. Thank you.